Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is elastic collision in two dimension. Two dimensions में elastic collision. अब इसमें कुछ इस तरह से होगा. There will not be head-on collision with the M1 and M2. M1 will subtract the M2 at certain angle. Let's see how. First I draw axis. X-axis, Y-axis. M2 which is at rest. V2I 0. M1 moving with velocity V1I. अब ये देखिए, ये इसके साथ हेड ऑन कोलाइड नहीं कर रहा, ये इस तरह से सब्ट्रैक्ट करके इस तरफ मूव कर जाएगा V1F वेलोसिटी के साथ, मेकिंग एंगल θ1 विद द एक्स एक्सिस. और ये M2 जो है, this will move in this direction just as billiard balls. This will be V2F, V1F, V2F, and the angle is θ2. अब क्योंकि ये एंगल बना रहे हैं V1F और V2F, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाना पड़ेंगे. इस तरह वाला कंपोनेंट ये होगा V2F cos थीटा, और दिस विल बी V2F sin θ2 cos θ2. इस तरह से इसके भी कंपोनेंट्स बनाना पड़ेंगे. ये होगा V1F sin θ1, और इस तरफ वाला कंपोनेंट एक्स एक्सेस ये होगा V1F cos θ1. और मोमेंटम, इनको हम इनके मैसेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम बन जाएगा M2V2F, M2V2F sin θ, M2V2F cos θ, M2VF cos θ1. तो इस तरह से हम इनको मैसेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनके मोमेंटम. तो फर्स्ट वी रिजॉल्व V1F and V2F in rectangular components. In rectangular components. Along x-axis. Along x-axis. x-axis की तरफ इसके कौन से कंपोनेंट बनेंगे जी? V1F cos θ1 and V2F cos θ2. V1F cos θ1 and V2F cos θ2. ये along x-axis. और along y-axis ये बनेंगे जी V1F sin θ1 and V2F sin θ2. ये y एक्सिस की तरफ कंपोनेंट बनेंगे. अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे जी. यूजिंग law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum.
First along x-axis. First along x-axis. And initial momentum along x-axis. That is m1 v1 I. इसका इनिशियल मोमेंटम 0. फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस m1 v1f cos theta 1 प्लस m2 v2f cos theta 2. m1 को इस तरफ कर लीजिए. दिस विल बी m1 v1i minus m1 v1f cos theta 1. That should be equal to m2 v2f cos theta 2. This is the conservation of momentum along x-axis. Similarly, along y-axis. Similarly, along y-axis. Before collision, no body is moving along y-axis. So initial momentum along y-axis, that is 0. Final momentum. This is positive y-axis, v2f sin theta 2, and momentum will be m2 v2f sin theta 2 minus m1 v1f sin theta 1. इसको इस तरफ ले आइए. This will be m1 v1f sin theta 1 is equal to m2 v2f sin theta 2. This is the conservation of momentum along y-axis. Along y-axis and conservation of momentum along x-axis. Now, conservation of energy, kinetic energy. Conservation of kinetic energy. Initial kinetic energy of m1 1 over 2 m1 v1 I square. 1 over 2 m1 v1 I square प्लस 0 है ना लिखें उसको. दैट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है 1 over 2 m1 v1 f square. m1 की फाइनल काइनेटिक एनर्जी और m2 की 1 over 2 m2 v2 f square. This is the conservation of kinetic energy. 1 over 2 इसके अंदर कॉमन है and we get m1 v1 I square minus m1 v1 f square. That should be equal to m2 v2 f square. This is the conservation of kinetic energy. अब ये प्रूफ किस तरह से होंगे. इसके अंदर 4 क्वांटिटीज अननोन है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के. दीज आर v1f v2f theta 1 and theta 2. v1f v2f theta 1 and theta 2. These are the unknown quantities. These are the, अगर हम इनको मेजर कर सकें, इनको जान सकें,
तो ही हम इन इक्वेशंस की मदद से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को वेरीफाई कर सकते हैं। नोइंग the values of V1F, V2F, theta 1 and theta 2, we can prove conservation of momentum and kinetic energy. So this is the case of elastic collision in 2 dimensions. So I think it is clear to you। और इसके साथ ही ये टॉपिक एंड हुआ। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।